सैम जी कर दीजिए सर। स्टार्ट है मैम। Okay, today we'll be talking about the international business environment, and then we'll talk about some of the theories that are there in your international trade. Let me just share my screen first. Yes, there was certain problem in the connections. I hope my screen is visible to all. Okay, let's start. Okay, so today we'll be starting first with the international business environment, and then we'll talk about some of the international trade theories जिसमें हम absolute advantage और comparative advantage की बात करेंगे. Now first start with your international business environment. Now अगर हम business environment देखें किसी भी firm का, ठीक है, so the business environment of a firm it consists of various factors. एंड यही फैक्टर्स यही फोर्सेस क्या करते हैं जो फर्म है उसकी लाइफ को उसके डेवलपमेंट को बेसिकली क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं. ठीक है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होंगे जनरली जो कि कंट्रोलेबल हैं बाय द फर्म. ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर लार्जली अनकंट्रोलेबल बाय द फर्म. ओके, नाउ जो बिजनेस एनवायरनमेंट है फर्म का और जिस फर्म का बेसिकली जो फर्म एंगेज है इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस इट्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स. Okay, why it's very much complex? Because you can see the firms nowadays they are just not constrained, they are just not confined themselves into the domestic market, into the national market, but also to the other markets, to the foreign markets. Okay, moreover you can see बहुत से connections हैं of the firms, those who are there in the different countries. Now with the growth of the international business बहुत सी ऐसी organizations हैं और बहुत सी ऐसी large organizations हैं those who see themselves as a global in orientation. Okay? So business environment जो है in businesses का और in firms का we can say that it is in terms of layers. ठीक है, सो हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ लेयर्स. फर्स्ट जब हम देखें तो फर्स्ट कौन सा आपका एनवायरनमेंट है, इट इज योर इमीडिएट internal environment which is within the organization, and then when you will be moving outwards तो आपका कौन सा environment आ जाता है, external environment. ठीक है, external environment that surrounds the business as well as जो business की
फंक्शनिंग को या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा एनवायरनमेंट, लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया, आपका लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल, ये सारे आपका क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट है ना। अगर हम बात करें एक इंटरनल एनवायरनमेंट की, सो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, आपकी कोई भी फर्म है सो वो उससे इफेक्टेड है, ठीक है, कंपनी की कैसी पॉलिसीज है, उसके क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। बट नाउअडेज यू कैन सी कि फर्म सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट से ही इफेक्टेड नहीं है, बट द फर्म इज ऑल्सो बीइंग इफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म जिसकी इंटरनेशनल ओरिएंटेशंस है, सो सिर्फ होम कंट्री के एनवायरनमेंट से ही नहीं, बट वो होस्ट कंट्री के एनवायरनमेंट से भी क्या होती है, affected होती है, ठीक है, not only of the home country environment but also the global factors affected. So आपका जो domestic यहाँ पे business environment है उसमें कौन से हैं, बेसिकली वो फैक्टर्स आते हैं या फिर वो फोर्सेस आते हैं जो ओरिजिनेटेड है विद इन द होम कंट्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ही डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिनका इन्फ्लुएंस फर्म के वर्किंग एनवायरनमेंट पे भी है, एंड दीज फैक्टर्स दे आर आल्सो बी लिंक्ड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3। क्या हो सकता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, और कल्चरल एनवायरनमेंट। Now we'll see all of these environment one by one. अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो इंटरनेशनल बिजनेस का, इट कंसिस्ट ऑफ योर इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम्स होम कंट्री के भी इकोनॉमिक सिस्टम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और होस्ट कंट्री की भी, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्म क्या है, एक ऐसी फर्म है जिसकी इंटरनेशनल ओरिएंटेशंस है, बेसिकली एक ऐसी फर्म है जिसके ऑपरेशंस एक्सटेंडेड है टू द अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक है। other than that, other than your economic systems of the home and host country, there are various economic variables, जैसे level of economic growth हो गया, डेवलपमेंट है, इन्फ्लेशन है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को हर एक वेरिएबल को इवैल्यूएट करना चाहिए in order to succeed into the international business. Now first अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करें, सो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली है क्या, सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सो इकोनॉमिक सिस्टम हियर इट डिटरमिन्स द बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स किसके बारे में, रिगार्डिंग योर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद इन एन इकोनॉमी, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का सबको पता है, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या है, स्कार्स है, एंड दे कैन बी पुट अप टू द मल्टीपल यूजेस। सो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली क्या है, एक बेसिक एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है विच स्पेसिफाइज सर्टेन रूल्स, और रूल्स किसके लिए हैं, रिगार्डिंग the use of the economic resources in different activities क्या हो सकती है, like production, distribution of goods and services, just to satisfy the human wants. Now economic systems, therefore we can classify on the basis of your ownership and the basis of the control of the resources. और यहाँ पर आपके two extreme points है on the scale. One can be the capitalist or market based system, और दूसरा क्या हो सकता है, command based और state owned economic system. Now in between of these two there lies the mixed economy, ठीक है। so mixed economy को अगर हम देखें, so mixed economy basically इसमें दोनों के ही features हैं, capitalist और market based system के भी, और command based और state owned इकोनॉमिक सिस्टम के भी, दोनों के ही फीचर्स इसमें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, बेसिकली इट लाइज बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑन द स्केल। एक एंड पॉइंट पे क्या है आपका कैपिटलिस्ट और मार्केट बेस्ड सिस्टम है, दूसरा एंड पॉइंट पे कमांड बेस्ड और स्टेट ओन्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, एंड इन बिटवीन यू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी दैट कंबाइन द फीचर्स ऑफ दीज टू। अगर हम कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट सिस्टम की बात करें, सो कैपिटलिस्ट को और हम क्या बोल सकते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इट कैन आल्सो बी नोन एज प्योर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। सो ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो मार्केट है वो डिटरमिन करती है द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन,
और इसी सिस्टम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल्स कितने हैं? 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज परस्यू ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, देन सेकंड इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड थर्ड इज योर कंपटीशन। ओके, सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, सो मेन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो क्या होता है? दैट इज टू ऑपरेट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, मेन बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? दैट इज टू ऑपरेट फॉर प्रॉफिट। सो एक सेंट्रल प्रिंसिपल जो कैपिटलिज्म का है, दैट वाज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1759। ठीक है, सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? इट वाज बीन कॉल्ड एज द इनविजिबल हैंड। ठीक है, सो इट गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू दिस, जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल का पर्सूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है, बेसिकली वो क्या है? एक इनविजिबल हैंड है दैट guides him towards the economic activity, and this economic activity it is being focused on the profit maximization. ठीक है, सो यहाँ पर स्मिथ ने आर्ग्यू किया कि जो मैक्सिमाइजेशन है ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, इट विल लीड टू द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, सो यही जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, यही किससे एसोसिएटेड है? इट इज बीइंग एसोसिएटेड विद द कैपिटलिज्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, जो कि क्या है? एक लेजर कैपिटलिज्म है। सो अगर देखेंगे आप ब्रिटिश इकोनॉमीज, यूएस इकोनॉमीज, ये क्या है? एग्जांपल्स हैं ऑफ योर प्योर कैपिटलिज्म। ओके, एंड दीज आर द कंट्रीज जहाँ से ये कैपिटलिज्म क्या हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था। Now second, अगर हम प्रिंसिपल देखें, विच इज द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज में क्या है? सो ये क्या है? राइट है एक इंडिविजुअल्स का। ठीक है, राइट क्या है? क्या है? एक राइट है इंडिविजुअल्स का इन अ सोसाइटी दैट दे कैन परस्यू एनी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फॉर्म दे डिजायर। ठीक है, सो under this, you know, the capitalist or free market system, every individual has a right. क्या राइट है हर एक इंडिविजुअल के पास? कि वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर सकता है? परस्यू कर सकता है इन एनी फॉर्म एज द डिजायर। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या है? फ्लरिशेस इन योर ओपन सोसाइटी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स क्या है? बेसिकली वो फ्री है, ठीक है, टू कम्पीट इन द मार्केट प्लेस एंड टू एक्यूमुलेट द प्राइवेट वेल्थ। सो एक लेजर इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है उसका रोल बेसिकली क्या है? एक रेगुलेटरी रोल है। सो जो ट्रांसपेरेंट और फ्री रिजीम्स हैं ऑफ बिजनेस रेगुलेशन एंड स्टेबल एंड इम्पार्शियल लीगल सिस्टम क्या है? दे आर द प्री कंडीशंस। किसके लिए प्री कंडीशंस है? फॉर अ हेल्दी फ्री एंटरप्राइज। ना अगर हम प्राइवेट ओनरशिप की यहाँ पे बात करें, सो अगर प्राइवेट ओनरशिप है, सो दे आर द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, सो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है यहाँ पे, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम हियर, इट इज बीइंग गाइडेड by the forces of market, and these forces of market they determine the answers to the central questions. Central questions क्या है? कि what, how and for whom to produce. ठीक है, so जो private ownership है वो क्या है? They are the means of production, and the capitalist system is being guided by the forces of market in order to answer the 3 central questions, which are your for what, who, how and for whom to produce. ठीक है, so in order to maximize profits, firms क्या करेंगी? Firms चाहेंगी कि एक कोई cheapest methods of production के, in order to produce some commodities. ठीक है, and then उनकी जो डिमांड हो वो मार्केट में with the highest prices in the market. ठीक है, बट यहाँ पे इसका एक कोई ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? द ड्रॉबैक इज दैट एनीवन हु डज नॉट हैव द परचेजिंग पावर, सो वो इस चीज का, इस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन सकता इस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, और अगर ऐसा ही रहा तो क्या हो जाएगा? एक ह्यूज गैप आ जाएगा, एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा किसके बीच में? बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, now the last principle is the competition. So competition kya hai? It's a very essence of this market economy. Okay, and here the competition is being characterized by various combinations, okay, with the interaction that is there between the buyer and the sellers. Okay, and इसी के जरिए जो होगा आपका price determined होगा at different level for goods as well as for the services. Now यहाँ पे जो central economic decisions है, again कौन सा decision है? Central economic decisions, what, how and for whom to produce. ठीक है, so ये किस पे based है? Basically they are based on the free forces of your demand and supply. और जो key factors हैं that make your market economy work, वो क्या है? आपका consumer sovereignty. Consumer sovereignty का मतलब क्या है? That is, it's a right of the consumers to decide कि उनको क्या buy करना है, and फ्रीडम जो है वो कॉर्पोरेशंस के पास भी है, कंपनीज के पास भी है, दैट इज टू ऑपरेट इन द मार्केट।
ठीक है। सो कंज्यूमर के पास क्या राइट है, कंज्यूमर के पास क्या फ्रीडम है, दैट इज दे कैन डिसाइड हाउ टू स्पेंड द वेजेस, हाउ टू स्पेंड देयर प्रॉपर्टी, यू नो द इनकम दैट दे आर बेसिकली बीइंग जनरेटिंग, ठीक है। और ऐसे ही प्रोड्यूसर और बिजनेस फर्म्स के पास क्या राइट है, क्या फ्रीडम है, दैट इज द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन द मार्केट, ठीक है। सो ये क्या है आपकी कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट सिस्टम्स। Now coming to the command economy, so command economy here it is also being known as your centrally planned economy, and ये जो based है socialist principles of collectivism के ऊपर based है. So it is based on the theory of communism जो originally propagated की गई थी by Karl Marx, and here it visualizes your different dimensions of economic activity, like you know कौन कौन से decisions like pricing decisions हैं, आपके प्रोडक्शन डिसीजंस हैं, ओके ना। इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होता है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वेदर इट्स यू नो प्राइसिंग डिसीजन और मे बी आपके प्रोडक्शन डिसीजंस हैं, वो सारे कौन डिटरमिन करेंगे, इट वुड बी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, ओन करती है और कंट्रोल करती है ऑल ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। सो जितनी भी प्रोडक्शन है इन होती है वो कहाँ पर होती है, इन स्टेट ओन फैक्ट्रीज एंड लेबर यूनियंस, दे आर ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दिस कमांड इकोनॉमी, दे कैन बी द अर्सवाइल यूएसएसआर एंड एज वेल एज ऑफ द चाइना, ठीक है। बट एक अगेन कमांड इकोनॉमी अगर हम सोशलिज्म का भी देखें तो एक ड्रॉबैक है, and the drawback is the lack of incentives for the producer, because all of the decision जो भी resources own करती है, you know pricing decision हो गया, production decision हो गया, वो क्या ले रही है, गवर्नमेंट ही ले रही है। so यहाँ पे जो drawback है वो किसके लिए है, basically producers के लिए है, and because of this command economy also, you know it also leads to your overproduction, inefficiencies and inflexibilities, ठीक है। so अगर हम founding fathers देखें और socialism that has been visualized an ideal society, okay, so it basically it considers that all members by the command economy, if you work under the command economy with the command system basically, so all the members they would be treated as equal, okay, but ऐसा नहीं होता है, ठीक है। basically हर एक member equally treat नहीं होता है, and there are stark inequalities under the domination of the state, okay. so यहाँ पे जो production है consumer goods का, वो completely ignore किया जाता है, and जो focus है वो basically किस पे रहता है, on the military production, okay? so आपका ये command economy। Now coming to the mixed economy, now as I said, on the extremes you have two, command and the capitalist. In between you have mixed economy. So mixed economy, it exists in between of your market and command systems, ठीक है। सो मिक्स इकोनॉमीज में क्या होगा, दोनों का ही रोल होगा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी होगा और स्टेट ओनरशिप भी होगा, गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होगा। सो यहाँ पे it is being characterized by private enterprise in some sectors and significant state ownership and government planning in others. So जो fundamental concept है underlying of this mixed economy is that कि यहाँ पे welfare state जो है basically is the notion of the welfare state which basically originated in your United States after the Great Depression. Okay, and most of the countries you can see such as UK, France and Sweden, they follow this particular model. And moreover अगर हम developing countries की भी बात करें like India and other countries, they also follow this mixed economy. Okay, now another term that we can use in order to describe the mixed economy is your market socialism. So in this particular system, although जो state है वो own करती है significant resources, but जो allocation है resources का, it comes from your market price mechanism. ठीक है, so जो model है of your market socialism, it basically gives also a dimension of social justice to capitalism, जो कि basically capitalism में क्या था, सब कुछ जो market forces पे ही था, ठीक है। and we said that कि there can be huge inequality between the rich and the poor. so here जो major आपका जो कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो आपके प्राइवेट ओनरशिप में होंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो स्टेट ओनरशिप के पास होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो स्टेट है और जो प्राइवेट ओनरशिप है इंडस्ट्रीज की, वो दोनों रहेंगी, ठीक है। सो जो क्रूशियल इंडस्ट्रीज हैं जो दैट शुड बी अंडर द कंट्रोल, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज हो गई, बैंकिंग हो गई, ऑयल हो गया, एयरलाइंस हो गए,
ठीक है। सो ये किसके पास रहेगा, आपका नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, तो ये आपका स्टेट ओनरशिप के अंदर आएगा, एंड द अदर दे कैन गो टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, या फिर चाहे हम मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट और कमांड इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। सो बेसिकली कंट्रीज कौन सा अडॉप्ट करती है इकोनॉमी, या कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करती है? सो द आंसर इज दैट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड देखें, यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी, हम ये नहीं कह सकते कोई भी इकोनॉमी यानी प्योरली फ्री मार्केट इकोनॉमी है या प्योरली कंप्लीटली कमांड इकोनॉमी है। सो मोस्ट ऑफ द मार्केट इकोनॉमीज you will see they have some degree of government ownership and control, whereas on the other hand हम most देखेंगे कि बहुत से ऐसी command economies हैं, now they are moving towards your market economy and away from the command concepts। ठीक है। so we cannot say कि एक कोई country है fully वो market economy ही follow करती है या command economy भी, ठीक है। there is a mix। Now coming to the transition economy, so transition economy क्या है? So is the one that is making the shift from one economic system to another। ठीक है। So basically यहाँ पे क्या हो रहा है? Transition हो रहा है। Transition किसका हो रहा है? Economic system का हो रहा है। जो economy क्या कर रही है? Transition कर रही है। It is shifting from one economic system to another। So in the late 1980s and early 1990s, it saw many countries moving away from centrally planned economies towards the free economies। Okay, so it includes many countries like erstwhile Soviet Union, followed by more than 30 countries in Eastern Europe, Asian states like China and Vietnam and other countries. Now, coming to the economic indicators, so as I said, in economic environment we have two of the elements, like first क्या हो सकता है, economic system हो सकता है। economic system किसका? home और host country का। the other can be the economic indicators or economic variables। ठीक है। so यहाँ पे जो economic variables है या economic indicators है, they are also very much important in order to take a certain decision, and they are important for an international business manager। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इंडिकेटर आपका जीडीपी हो सकता है। सो जीडीपी इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट्स अ टोटल मार्केट वैल्यू of all the final goods and services which are being produced within the country in a given period of time, usually calendar year। ठीक है। so there are two ways in order to measure this GDP। एक real हो सकता है GDP और एक nominal हो सकता है। real क्या है? real is your current market value of the final input। Now, जब ये real GDP adjust किया जाता है for a price change by dividing it by the price index और GDP deflated, इसको हम nominal GDP बोलते हैं। ठीक है। Now, how this GDP is a very useful economic indicator? Why? Because it allows you in order to assess the rate of productivity of an economy। ठीक है। The next is your GNI, which is also being known as gross national income। So it's the broadest measure of your economic activity, and it includes your GDP, and it's the market value of all the final goods and services newly produced by a national economy, including the income earned by national residents from overseas operations। Okay, now अगर हम GNI की बात करें, ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है which is your per capita GNI। ठीक है। सो पर कैपिटा GNI कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज GNI of a nation divided by its total population। So जो countries जिनकी high populations है, जिनका high per capita GNI है, so they are the most desirable countries in terms of market potential। ऐसे ही अगर जिन countries का low per capita GNI है या low populations है, so they are least desirable। Okay, और जो बाकी की countries हैं, they can fit somewhere in between। Now, why do we use GNI as an economic indicator? Because जो आपकी basic demand है product की, वो depend करती है upon the income level of the consumer। ठीक है। लोग डिमांड तो तभी करेंगे आपके प्रोडक्ट्स की जब उनका कुछ एक इनकम है। ठीक है। सो जो आपकी डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल ऑफ योर कंज्यूमर। Okay, so when the companies, the firms, they are deciding whether they want to go for a particular country or not। ठीक है। फर्स्ट फर्म को क्या करना चाहिए कि उनको इवैल्यूएट करना चाहिए इनकम लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री टू बी एबल टू एस्टिमेट कि उसकी डिमांड क्या रहेगी प्रोडक्ट्स की वहां पर। ठीक है। The next can be the economic growth। So
So economic growth क्या है? So it's a change in your GDP of a country from one year to the next. Moreover, quantitative और monetary growth जो है economy की, वो कैसे measure की जाती है? By the changes that are there in the gross domestic of the time periods. Coming to the business cycles. So business cycle क्या है? So it's a phases of your fluctuation that comes in your fluctuations इसमें output, income and employment generation in the economy. So जो business cycle है, business cycle it can range from 2 to 10 years and यहाँ पे 4 phases होते हैं जो कि interconnected phases हम बोलते हैं. 4 phases कौन से हैं? Prosperity, recession, depression and it is being followed by recovery. अगर हम हेल्थीएस्ट फेज देखें साइकिल का, वो कौन सी होती है? प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ इनकम होती है और आउटपुट होता है और लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा. एंड वर्स्ट फेज कहाँ पर होगा? जहाँ पे वर्स्ट फेज क्या है? डिप्रेशन है, जहाँ पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और कॉन्फिडेंस क्या है इकोनॉमी में? इट इज एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल. अगर हम HDI की बात करें, so HDI क्या है? Human Development Index. So again, it's a ranking tool, and it is based on certain factors other than your monetary or the economic measures. कौन-कौन से factors हो गए? Like life expectancy, literacy, educational attainment, ये सारे चीजें इसमें आती हैं. इन्फ्लेशन क्या है? नेक्स्ट इन्फ्लेशन है आपका एक इंडिकेटर. सो इट्स द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ पीरियड, यूजुअली 1 ईयर. सो बेसिकली इट रेफर्स टू द पीरियड जहाँ पे आपके जो प्राइसेस हैं वो कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं? राइज कर रहे हैं. ठीक है. सो इसका जो इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? ऑपरेशंस पे आएगा, बिजनेस फर्म के ऑपरेशंस पे आएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उस पर इम्पैक्ट आएगा, वेजेस पे इम्पैक्ट होगा. अगर कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, तो इवेंचुअली आपका जो प्राइस है फिनिश गुड्स के वो भी इंक्रीज होंगे. ठीक है. सो दीज आर द सर्टेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स और फैक्टर्स. द नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. So balance of payment क्या है? Basically it's a record of your country's transaction with rest of the world. यहाँ पे जो transactions आएंगी, they can be in respect of your trade as well as of your investment. ठीक है. अगर surplus होता है balance of payment account का, so that means there is an excess of foreign exchange inflow over outflow. ऐसे ही अगर आपका surplus है, so surplus की वजह से क्या होगा? There would be an increase in the foreign exchange reserves. अगर डेफिसिट होता है, सो डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? डेफिसिट हियर इंडिकेट योर फॉरेन एक्सचेंज स्कैर्सिटी. Then next we have external debt. So external debt is basically your country's borrowings. Okay, so we can measure it in two ways. Total amount of the debt भी हो सकता है और debt can be reflected as a percentage of your GDP, the country's GDP. And last is your exchange rate. So exchange rate we have already discussed this in the previous classes. Exchange rate क्या है? So the rate, exchange rate would be the price of the domestic currency in terms of any of the foreign currency. ठीक है. For example, value of the Indian rupee is in terms of dollar. ठीक है. So यहाँ पे जो exchange rate है वो भी एक बहुत important economic indicator है. Why? Because it also determines your economy's inflows and outflows of foreign exchange for trade and investment. For example, if we say that the price of the rupees in terms of dollars is 55. ठीक है. So it means that अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, so इंडियन एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है ₹55 for every dollar worth of the goods he sell in the foreign market. और ऐसे ही जो इम्पोर्टर है, अगर कुछ इम्पोर्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ₹55 पे करना पड़ेगा फॉर एवरी डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स दैट ही और शी इज बाइंग इन द फॉरेन मार्केट. ठीक है. अब यही अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होता है और ये ₹55 की जगह 60 हो जाता है, so that would mean अब ये जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ गया है? ये जो इंक्रीज हुआ है ये किसके ऊपर पड़ गया है? बर्डन किसके ऊपर आ गया है? इम्पोर्टर के ऊपर आ गया. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सपोर्टर की साइड से देखें, तो एक्सपोर्टर की जो अर्निंग्स है वो अब क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है विद दैट ऑफ अ चेंज इन योर एक्सचेंज रेट. ठीक है. सो ये क्या है? आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. अभी तक किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, नो डाउट. नाउ next is your political system. Now political system क्या है? So it is a system of governance in any economy. A very simple definition. What is your political system? So it's a system of governance in any economy. Okay. So यहाँ पे अगर हम political ideology की बात करें, so political ideology क्या है? It can be correlated with the economic philosophy. For example, एक example लेके इसको समझते हैं. Like political ideology जो United States की है, it is based on your constitutional rights of private property and they have a freedom of choice. ठीक है? So this particularly finds its counterpart in the economic philosophy of the capitalism itself. Similarly, अगर हम countries देखें like former Soviet Union, China, Cuba, North Korea देखें, so they have been the followers of communism, so therefore they believe in state ownership of the property. Okay, so political ideology से ही क्या हुआ, there was a rise to your political system and which formed the basis of your governance of the nations. So there can be two broad classification of the political system. एक collectivism हो सकता है और individualism हो सकता है. Okay, other than that there are two other important concepts that are being associated with your political system, जो कि एक democracy है और एक है totalitarianism. Now collectivism की बात करें, so collectivism क्या है, किस पे based है? So it is being based on the philosophy of Greek thinker which is Plato and emphasizes the supremacy of the needs of a society as a whole over the needs of the individual. So it says that जो needs a society की they come before as compared to the needs of the individual. So in the modern context, जो philosophy है collectivism की translated itself into the teachings of Karl Marx which gave rise to the socialism, and जो basic teachings है Marxism की, it basically emphasize on the difference that is there between your capitalist owner and the worker who is there in the distribution of the profits of the enterprise. So here Marx felt that जो capitalist system है basically वो workers को क्या कर रहा है, exploit कर रहा है, because under this the workers they are not being able to get the fair wages for their labor. ठीक है, so therefore he advocated that जो state ownership है production की और distribution की वो होनी चाहिए, so that जो benefits है state enterprise के वो share किए जा सके by the society as a whole rather than कि एक individual capitalist के पास वो share जाए. ठीक है, so in the early 20th century जो socialist thinking थी वो क्या हो गई, it got split into two of the distinct schools of thought, जिसमें एक communism था और एक दूसरा क्या था, social democracy. Now communism में क्या हुआ, so communism believe करता था in achieving of your socialist goals only through violent overthrow of the existing social order. Okay, so जो communist thinking थी ruled the world in your 1970s. ठीक है, so यही जो policy थी, political philosophy थी of the erstwhile Soviet Union और उसके जो allies थे Eastern Europe में उनकी थी. ठीक है, moreover communism क्या हुआ, उसके कुछ टाइम बाद collapse हो गया in most part of the world by 1990s, and then it was being replaced by alternative philosophy. So in the present context there are only few nations those who follow this particular communism. अगर हम सॉफ्टवेयर वर्जन देखें सोशलिज्म का, सो वो क्या है, सोशल डेमोक्रेसी है, एंड इट बिलीव दैट जो सोशलिस्ट गोल्स है दे कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल सिस्टम इंस्टेड कि हम वायलेंस यूज करें. ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट थिंकिंग बिलीव करते थे. Now this particular system you can find it in different countries like France, Germany, Sweden, UK as well in the Western context, and moreover developing countries में भी यही मिलता है. So moreover अगर आप देखेंगे सोशल डेमोक्रेसी को, so इसको हम सोशल कैपिटलिज्म भी कहते हैं, जिसमें जो स्ट्रैटेजिक और हेवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे पावर हो गया, कोल हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस है, railways हैं, they are under the state supervision. On the other hand, free market forces are also there so that they can operate in other sectors of the economy. However, अगर हम state owned companies भी देखेंगे, so they are now largely unsuccessful. They were largely unsuccessful because these types of business enterprises they function as monopolies in the protected environment. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे, so यहाँ पे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी इनकी मोनोपलीज थी. ठीक है, they were being provided with the protected environment,
and they were being connected with the financial support. So इससे क्या हुआ? It resulted the change in power in the countries like your UK and Germany, so that they can go for more market-oriented system. Moreover, India and Brazil के cases में भी यही हुआ कि उन्होंने liberalization measures adopt किए. Okay, and they also went for liberalizing their different sectors. Now the second is your individualism. First हमने क्या किया था? Collectivism, and then we have individualism. Now the philosophy है individualism की, it's basically being based on the well-being of the individual as the path to the well-being of society as the large. So अगर हम individualism को compare करें with that of collectivism, so यहाँ पे जो individualism है वो किस पे stress करता है? On the interest of the individual. So it says that जो interest है, individual का जो interest है, shall come first as compared to the interest of the society at large. Okay. Then जो basis है individualism का, it is being based on the teachings of Aristotle, who argued that individual diversity and private ownership of property, they are far more productive than communal property and is the path to social progress. ठीक है. Further इसको redefine किया था in the works of David Hume, Adam Smith and J.S. Mill, and in recent time it has also been addressed by various economists like Milton Friedman, Frederick von Hayek and James Buchanan. Now जो individualism है ये इसके दो, it is being based on two of the basic fundamental beliefs. First क्या है? The guarantee of individual freedom and self-expression as an absolute right of the individual, and the second is the belief in the pursuit of individual self-interest leading to the welfare of the society. ठीक है. So mainly जो individualism है, it emerged as very influential political philosophy जो कि follow की जाती थी in Protestant nations of England or Netherlands maybe, and moreover it is also been influencing the thinking of the American colonies of England. Now जो underlying ideology conflict है between individualism and collectivism, so यही basis था of यही reason था basically of the Cold War after the end of the two world wars with the United States and the former USSR. The next is democracy. So democracy क्या है? It's a system of government जहाँ पे जो लोग हैं either directly or through their elected representatives that decide the rules of governance. In most of the nations now you can see this particular system. So individualism has strong links with the notion of democracy, and basic features क्या है? Election of representatives for a fixed period of time, independent judiciary to protect individual property and rights, separation of the legislature from the executive arm of the government, the right to express opinions freely, non-political bureaucracy and defense infrastructure, and accessibility to the decision-making process. Okay, so this is a dominant form of government in the world today, and most of the nations now they follow it. The last is totalitarianism. So it is basically the system जहाँ पे government जो है, it's a system of government जहाँ पे एक individual या political party का क्या होता है? Complete control होता है. क्यों होता है? By the virtue of religious beliefs, tribal power होता है, because of ideology, and either refuses to recognize other parties या फिर completely दूसरी parties को क्या कर देते हैं? Suppress कर देते हैं. ठीक है. So communism और जो fascism है, basically they are the reflections of totalitarian philosophy, and this stress the role of strong central governments such as your USSR, former USSR, China, Cuba, North Korea and others. Now अगर हम totalitarianism देखें, so it can exist in different forms. Communism हो सकता है, theocratic totalitarianism हो सकता है, tribal हो सकता है, right wing totalitarianism. अगर हम first communism की बात करें, so it's the best known form of your totalitarianism in which जो political और जो economic systems होते हैं, they are virtually inseparable. ठीक है. So communists किस पे believe करते हैं? They believe in the equal distribution of the wealth. Therefore, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वही सारे प्रॉपर्टी ओन करती है और वही सारे डिसीजंस भी लेती है. डिसीजंस किससे रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन as well as of your distribution of goods and services. So since 1990s, however, communism क्या हुआ?
कोलैप्स हो गया था इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम थ्योरेटिक टोटलिटारिज्म की बात करें तो ये जहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अपने टोटल पावर एंड दे रिप्रेस और मे बी दे हरास द नॉन फॉलोअर्स। सो यू कैन फाइंड दिस इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, जहाँ पे बेसिकली लिमिटेड फ्रीडम होती है ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्सप्रेशन। Then third is tribal totalitarianism. So you can find this in the African states of Uganda, Kenya and other. ठीक है, जहाँ पे monopolization होती है of power by the particular tribes. And last is right-wing totalitarianism. So you can find in the fascist regimes of Germany and Italy in 1930s or 1940s में होता था। ठीक है, so basic feature इसका यही है, although it permits some of the individual economic freedom, but फिर भी कुछ individual political freedom में restriction होती है। ठीक है, now the next is your legal environment. So जो legal dimension है business का ना, you can see it has its own importance with that of growing trade and investment across the globe. So legal environment has historically been determined by national legal system based on state sovereignty, and जितनी भी commercial transactions होती हैं across your national borders, चाहे वो export contracts हो, चाहे complex joint ventures हो, all of them has to be conformed with the provision to the national legal systems. So there can be three kinds of legal system in the world today. Common law हो सकता है, civil law और theocratic law. अगर हम कॉमन लॉ की बात करें तो कॉमन लॉ में क्या है, बेसिकली इज लीगल सिस्टम व्हिच इज बीइंग बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन पे बेस्ड है, कस्टम या उसकी यूसेज या प्रीसिडेंट पे बेस्ड है। सो यहाँ पे एसोसिएटेड है विद योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये एक ऐसा सिस्टम है व्हिच इज बीइंग बेस्ड ऑन सर्टेन लीगल हिस्ट्री। ऐसे केसेस जो कि डिसाइडेड हो चुके हैं इन द पास्ट, ठीक है, उन केसेस के ऊपर, और मे बी इट इज बीइंग associated or based upon the application of law in the specific situations. Okay, so you can find this particular system and it was being originated and it was being developed in your Great Britain, and you can find it in your different former British colonies such as your Australia, New Zealand and even United States. The second is your civil law. So civil law is also being known as codified legal system. Again, it is being based on detailed set of laws, और जो कि these law make certain code. ठीक है, so एक ऐसा codified system है जिसमें rules and regulations होते हैं. That is how you can carry out the business activities. ठीक है, so most of the continental Europe and Latin America उसमें यही civil law system basically है. That was originated as far back as the Roman Empire. The third is your theocratic law. ठीक है, theocratic law में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो बेस्ड है ऑन योर सर्टन रिलीजियस कोड्स या उनके टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है। सो जैसे कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया, ठीक है, सो दे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, द मुस्लिम कंट्रीज रिलाई ऑन इस्लामिक लॉ। ठीक है, सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लीगल सिस्टम। अगर हम इस्लामिक लॉ की बात करें तो इस्लामिक लॉ बेसिकली came into existence in your 10th century, but over a period of time, the recent in the present time also the countries they follow it. ठीक है, so ये क्या है, एक moral law है rather than your commercial law, and it's a code of conduct which governs all aspects of your life. ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो जो इन्फ्लुएंस है इस्लामिक लॉ का, यू कैन फाइंड इन द एरिया ऑफ बैंकिंग एज वेल, जहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फोरबिड है. So this is your legal environment. Now coming to the demographic factors or demographic environment. So demographic environment में demographic factors क्या हो सकते हैं, like size of the population, population growth rate, या फिर composition क्या है, age composition क्या है, life expectancy क्या है, occupational status क्या है. So all of this they affect the demand for goods and services. Why? Because अगर आप देखेंगे age composition, जहाँ पे babies ज़्यादा है तो वहाँ पे baby products से ज़्यादा demand होगी. ठीक है, जहाँ पे adults ज़्यादा हैं, old adults हैं, तो वहाँ पे उन्हीं products की ज़्यादा demand होगी. So जो markets हैं with the growing population and income, उनको कैसे regard किया जाता है? They are being regarded as the growth markets. But the decline in the birth rate in certain countries like United States have affected the demand for baby products. So
view of that, there are certain companies, like one of the companies Johnson and Johnson, so they have overcome this problem. So उन कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिपोजिशन किए हैं, लाइक बेबी शैम्पू दे हैव रिपोजिशन, बेबी सोप पोजिशन किया है, and now they are promoting these products as the adults in the adult segment, particularly for the females. ठीक है, अगर हम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें, सो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से क्या होगा, जो आपकी लेबर सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी, सो प्रोडक्ट्स विच बेसिकली रिक्वायर द लेबर्स, ठीक है, या फिर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, सो उनमें आप you can employ that particular labor and you can go for the production of that products. Okay, अगर हम यही कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स देखें, ठीक है, सो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोमेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं, सो दे आर बीइंग अपोज्ड बाय द लेबर, ठीक है, एंड मोर ओवर बहुत से पॉलिटिशियन, इकोनॉमीज जो है कंट्रीज में, वो भी इनको अपोज करते हैं, ठीक है। सो जो एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है विच बेसिकली अफेक्ट्स द बिजनेस वर्किंग। ऐसे ही अगर हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देखें पॉपुलेशन की, सो दे हैव आल्सो द इम्प्लीकेशंस फॉर द बिजनेस। अगर लेबर इजीली मोबिल है बिटवीन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, रिलेटिवली स्मूथ होगी, एंड दिस विल आल्सो अफेक्ट द वेज रेट। अगर यही लेबर क्या है, हेट्रोजीनियस है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, रिलीजन, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर इन ऑर्डर टू वर्क विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो जितनी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, जितना उनका डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगी, different beliefs होंगे, different temperaments होंगे, so this will also give rise to the difference that is there in the demand patterns, and moreover the firm or the manager will have to employ the different marketing strategies for that, ठीक है। so ये क्या है, आपका demographic environment है। so I hope legal, demographic and political environment सबको समझ आ गया है, because after this we'll be moving towards your next, which is your cultural environment. अगर हम कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें, सो कल्चर जो है, इट्स अ वर्ड दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्चर व्हिच मींस कल्ट और वर्शिप। सो कल्चर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो इट कैन बी द नॉलेज व्हिच यू आर एक्वायरिंग, एंड यू आर एक्वायरिंग दिस नॉलेज थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सोशल बिहेवियर। नाउ दिस कल्चर is shared among the members of a group, organization and society, okay, and form the basis of individual and group behavior, and this culture is passed from one generation to another. Okay, now there are 5 important characteristics of culture. Culture क्या है, it's learned behavior, ठीक है, so individual क्या करता है, learn करता है through the experience of the group or from the group experiences. Culture is shared, so the group is basis of culture change, more important than the individual. Then it compels and determines the behavior of individuals. Culture क्या है, interrelated है, and moreover it provides orientation to the group behavior. Okay, so these are certain characteristics of culture. Now culture, if you see, it's a very complex or multi-dimensional subject hai, and in order to understand the nature of it, first you need to understand that is what are the different elements of culture and what would be the implication of these elements on the international business workings or maybe on the international business. So elements kya hai culture ke, it can be language, non-verbal communication, religion, values and attitudes, customs and manners and aesthetics. अगर हम language की बात करें, so language here is regarded as a key to culture. Why? Because it's the primary means, that is how language के through ही तो क्या करते हैं, you're transmitting your ideas, you're transmitting your information, ठीक है, from one person to another you're transmitting the ideas and information, ठीक है, and it helps you in social interaction,
and it creates a system of shared values and norms. So language क्या है? It is more than the vocabulary. हम language here is more than the grammar, ठीक है, that make up written or spoken expression. इसमें आपके gestures भी हैं, perceptions भी आते हैं, sensibilities भी आती हैं, ठीक है. So यहाँ पे communication का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि that you are speaking in the same language, ठीक है, but कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि भाई अगर आप कुछ अपने मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो दैट मीन्स बोथ ऑफ द पर्सन दे आर ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है, दे हैव सर्टेन आइडिया ऑफ द परसेप्शन दे हैव ऑफ द पर्सन विद whom the communication is being done, ठीक है. सो स्पोकन लैंग्वेजेस दे कैन एक्ट both as a common thread और ये बैरियर भी हो सकता है between the nations and the regions, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन इंडिया इटसेल्फ प्रिंसिपल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, बट सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है. अदर देन दैट बहुत सी ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं जो कि यूज की जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. सो यहाँ पर जो आपका जो लैंग्वेज है वो एक कॉमन थ्रेड भी हो सकता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, और वो एक बैरियर भी हो सकता है बिटवीन टू ऑफ द पर्सन, ठीक है. So with the opening of the economy since 1991, it has seen a large number of, you can see the large number of TNC from different countries, those who are being investing into India, ठीक है. So अगर इन बहुत सी companies India invest कर रही है, so they need to be known about the communication, about the language that the particular country they speak in. So communication difficulties हो सकती है for international business and they can arise जब क्या हो सकता है, मैनेजर को पता नहीं है about the local language, या उसको समझ नहीं आ रही है, मैनेजर बोल नहीं सकता local language, या मैनेजर किसी की सर्विसेज पे डिपेंड करता है. मैनेजर किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है. उस ट्रांसलेटर को भी कोई फ्लुएंसी नहीं है उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज की, ठीक है. सो वो क्या कर रहा है? बेसिकली मिस ट्रांसलेट कर रहा है. सो ये कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो सकती है फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, या तो उसको खुद ही नहीं पता, खुद ही समझ नहीं आती है लोकल लैंग्वेज, या खुद ही वो लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकता है. और दूसरी डिफिकल्टी कब हो सकती है? इवन इफ अगर वो ट्रांसलेटर रख भी लेता है तो ट्रांसलेटर भी उस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है, ठीक है, या तो वो कोई मिस कर देता है पॉइंट, या फिर वो मिस ट्रांसलेट करता है. सो नोइंग द लोकल लैंग्वेज इज गुड idea for the international managers because with that you can communicate better अपने local workforce जो भी होगी उससे. So क्यों better है? Because यहाँ पर direct knowledge of a language helps in clear and explicit understanding of the situation. The manager does not have to rely on someone else to interpret or explain things, ठीक है. सो लोकल लैंग्वेज को जानना क्यों अच्छा है? बिकॉज आपको डायरेक्ट नॉलेज होगी अगर लैंग्वेज की, सो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिचुएशन को. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल, द लोकल वर्कफोर्स इज बेसिकली बीइंग टॉकिंग अबाउट. अगर इससे क्या होगा कि आपको किसी ट्रांसलेटर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. देन सेकेंड इज लैंग्वेज प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू लोकल पीपल who are often more at ease and comfortable in communicating with someone who speaks their language. Basically, when you are entering into some country, let's say अगर कोई ऐसी MNC है, ठीक है, and they enter into India, अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई इंग्लिश ही बोले, ठीक है. सो यहाँ पे अगर आपको उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पता है, सो यू कैन गेट अ डायरेक्ट एक्सेस टू द लोकल पीपल. मोर ओवर दीज लोकल पीपल वुड फाइंड इट वेरी इजी टू टॉक टू यू, ठीक है. Then an understanding of the local language allows a usage of implied meanings, nuances, or other information that is not stated outright. Knowledge of the local language is also important because direct translation may be inadequate or misleading. ठीक है, अब हर एक चीज की आप इंग्लिश टू हिंदी नहीं कर सकते हैं. मोरओवर इफ यू आर डूइंग इंग्लिश टू हिंदी, जो एसेंस है उस बेसिक इन्फॉर्मेशन का, आइडिया का, वो क्या होता है, कभी कभार लॉस हो जाता है, ठीक है. सो लोकल नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज देयरफॉर इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट. Moreover, the use of technical manuals, catalogs, and advertising material may need the services of a translator. ठीक है, so ट्रांसलेशन क्या हो जाती है, कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं और वो टेक्निकल टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करती पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है. मोरओवर कुछ बिजनेस जार्गन्स होते हैं, जैसे इंडिया कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, सो कटिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या मतलब है? बेसिकली यू आर कटिंग डाउन द कॉस्ट मे बी ऑन कॉफी एंड बिस्किट्स एज अ स्टाफ मीटिंग्स,
ठीक है, और मे बी यू आर लुकिंग फॉर सर्टन चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। बट अगर हम यूरोपियन और अमेरिकन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के पर्सपेक्टिव से ये देखें, सो दिस वुड मीन दैट कटिंग डाउन द कॉस्ट वुड मीन दैट दे आर फायरिंग सम स्टाफ। अनदर कैन बी कि अगर हम ये बोलें कि कोई भी इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखें कि कोई भी मैनेजर अगर ये बोलता है दैट दे हैव फायर्ड देयर their maybe their workers, ठीक है। सो फायरिंग ऑफ द वर्कर्स यहाँ पे वो मीन करता है कुछ और, ठीक है। बट इन ब्रिटिश काउंटर पार्ट अगर हम ये देखें तो इसका मतलब क्या मतलब है कि दैट ही हैज सैक्ड दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। सो कुछ टेक्निकल जार्गन्स भी हो सकते हैं। Coming to the non-verbal communication, so non-verbal communication का मतलब क्या है, unspoken language, gestures हो गए, ये सब चीजें हैं। So gestures क्या है, common form है of cross-cultural communication, but they can vary in different part of the world. For example, अगर if you live in USA, so saying yes would mean that you are shaking your heads forward. But on the other hand, if you see Greeks, Turkish or Bulgarian, so if you are saying yes, you will move your head sideways to indicate the same meaning, ठीक है। सो जेस्चर्स का भी मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज वुड डिफरेंट हो सकता है। नाउ कमिंग टू रिलीजन, सो रिलीजन क्या है, इट्स अ कॉमन बिलीफ, रिचुअल्स दैट आर बीइंग रिलेटेड टू द इश्यूज दैट आर कंसीडर्ड सीक्रेट। नाउ रिलीजन्स हैज अ कैपेसिटी, चाहे आपका लाइफस्टाइल्स हो, बिलीव्स हो, वैल्यूज हो, एटीट्यूड्स हो, दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, ठीक है। मोर ओवर द बिहेवियर ऑफ द पीपल with each other, with the society, okay? So the religion has a significant bearing on that, okay? So in the world there are certain religions that the people follow. Christianity हो सकता है, Hinduism हो सकता है, Islam, Buddhism, Confucianism, okay? So हर religion का उनके लोगों पे, उनके businesses पे, different countries क्या होता है, impact होता है। So we'll take these one. For example, first is Christianity. Now, Christianity, it's one of the most widely practiced religion in the world, and it has many followers. अगर mass majority of Christians का, so they live in Europe, they live in America, ठीक है। Although they are numbered, it is still growing in many part of the world. Okay. Now, if you see Christianity, so Christianity किससे आया? Judaism से आया. So, like Judaism, it is a monotheistic religion. Monotheistic religion का मतलब क्या है? That is the belief in one God. ठीक है। So, जो religious division है in the 11th century, it led to the establishment of two major Christian organizations. एक क्या था? एक Roman Catholic Church, and other was the Orthodox Church. Today, if you see the Roman Catholic Church, so it accounts for more than half of all the Christians, most of whom you can find in your southern Europe and Latin America. On the other hand, if you see Orthodox Church, while it is less influential, but still you will find its importance in in several countries like Greece and Russia. Okay? So in the 16th century, the Reformation, it led to a further split with Rome, and जो result था उसका क्या था? It was Protestantism, ठीक है। So economic implications अगर हम Christianity की देखें, तो several sociologists they have argued that of the main branches of Christianity as Catholic, Orthodox, and Protestant, the latter has the most important economic implications. Now 1904 में prominent German psychologist Max Weber ने connection किया, he connected the chord between Protestant ethics and the spirit of capitalism. That has since become famous. Now Weber ने ये notice किया, जो capitalism है that emerged in Western Europe, जहाँ पे business leaders or owners of capital basically थे, as well as higher grade of skilled labor, and even more the highly technical or commercial trade personnel of the modern enterprises, basically वो क्या थे? Protestant थे, ठीक है। सो वेबर ने ये नोटिस किया अगेन कि जो कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ इन वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे जो बिजनेस लीडर्स थे, या फिर जो ओनर्स ऑफ कैपिटल थे, या फिर जो हायर ग्रेड्स ऑफ स्किल लेबर थे, या टेक्निकल ट्रेन पर्सोनल थे, कमर्शियल ट्रेन पर्सोनल थे, वो बेसिकली क्या थे? वो प्रोटेस्टेंट थे। Now,
वेबर ने थियोराइज किया कि प्रोटेस्टेंटिज्म में और मॉडर्न कैपिटलिज्म में क्या है, दोनों में कोई एक रिलेशनशिप है. सो ही आर्ग्यूड दैट जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है बेसिकली वो एम्फोसिस करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, ऑन द वेल्थ क्रिएशन. Okay, according to Weber, ये जो value system है, it was very much needed in order to develop the capitalism. ठीक है, so Protestants क्या करते हैं? They work hard and systematically they accumulate the wealth. However, the aesthetic belief suggests that rather than consuming this wealth by the pleasures, by indulging into certain pleasures, वो क्या करते हैं? वो invest करते हैं in the expansion of the capitalist enterprises. Therefore, the combination जो था hard work का और जो accumulation of capital का था, which could be used to finance the investment and expansion, it basically paved the way for the development of capitalism that was there in your Western Europe and subsequently in the United States. The next is economic implications of Islam. So Islam is second largest of the world major religions, and it dates back to 16 or 10 AD when the Prophet Muhammad begins spreading the word. Now adherents जो है इस्लाम के उनको हम Muslims बोलते हैं, and Muslims they contribute a majority in more than 40 countries. Okay. Moreover, if you see, Islam has had roots in different religions like Christianity and Judaism. Islam भी क्या है? एक monotheistic religion है, and according to Islam, worldly जो gain है और जो temporal power है, they are an illusion. Okay? Now, if you see the economic implications of Islam, so in the Islamic view of the world, जो human है, they are the part of collective in which the wealthy and successful have obligations to help the disadvantaged. That means, according to Islam, जो wealthy लोग हैं, successful लोग हैं, they have certain obligations. So उनकी obligation क्या है कि जो disadvantaged stage पे हैं लोग, उनको help करना. So put it simply, जो in Muslim countries you will find that it is fine to earn a profit so long as you are जो profit आप earn कर रहे हो, you are earning that profit and it is not based on the exploitation of others for one's own advantage. Furthermore, जो Islam है वो stress करता है on the importance of living up to the contractual obligations and keeping one words. ठीक है, and एक economic principle जो है इस्लाम का वो ये भी prohibit करता है, that is the payment or receipt of interest. ठीक है, so this is just not a matter of theology, but in most of the Islamic countries it's a matter of law also. ठीक है, for many years banks जो operate कर रहे हैं in Islamic countries, ठीक है, they conveniently ignored this condemnation, but starting in the 1970s with the establishment of the Islamic Bank in Egypt, the Islamic banks and now they have been opened in Muslim countries as well, and now there are hundreds of Islamic banks in more than 50 countries. Even जो conventional banks थे जो enter कर रहे थे market में, like Citigroup and HSBC, two of the world's largest financial institutions, they also offer the Islamic financial services. Okay. Now coming to the Hinduism, so Hinduism again, you will find most of the adherents of Hinduism in the Indian subcontinent, and like unlike your Christianity and Islam, its founding is not being linked to a particular person. Okay. Moreover, if you see the economic implications of it, so Max Weber, famous for expounding on the Protestant work ethic, we found in Christianity, also argued that the aesthetic principles and those who are being embedded in Hinduism, they do not encourage the kind of entrepreneurial activity in the pursuit of wealth creation that we find in Protestantism. So Protestantism में हमने क्या देखा था कि the people they were used to do the hard work and जितना भी वो उनका money था they used to accumulate it. ठीक है, they did not went for any of the, they did not used to indulge in any of the pleasures. ठीक है, accumulate करते थे wealth. Now, according to Weber, traditional Hindu values emphasize that individuals should be judged not by their material achievements but by their spiritual achievements. Hindus pursue the pursuit of material well-being as making the attainment of nirvana more difficult, but these all were the
old arguments of Weber. Now you can find कि इंडिया में भी बहुत से ऐसे entrepreneur startups क्या हो रहे हैं, rise हो रहे हैं nowadays. ठीक है, so it's a very old argument of Weber that the Hinduism do not encourage the kind of entrepreneurial activity in pursuit of wealth creation. Now coming to the Buddhism. Yeah, so Buddhism also is one of the religion that you can find, and यहाँ पे जो Buddhism है उसकी क्या implications है? So it emphasizes on wealth creation that is embedded in Protestantism is historically not found in Buddhism. Thus, in Buddhist society, we do not see the same kind of cultural stress and entrepreneurial behavior that Weber claimed to be found in Protestant West. Okay, so that is basically the difference between the Buddhism and Christianity. Okay. Now, in Buddhism, जो societies हैं, they were more historically deeply rooted to their local place in the natural world. इसका मतलब क्या है, जो economies थी they were more localized. There was a relationship between the people and also between the culture and the nature being relatively unmediated. Okay, so this was related to Buddhism. And last is Confucianism. Okay, so some scholars they say that the Confucianism may have certain economic implications as profound as those Weber argued to be found in Protestantism, but they can be of different nature. Different nature क्यों? Because they were in regard to these 3 values that can be found in Confucian system of ethics, and they are of particular interest. Or 3 values were your loyalty, reciprocal behavior, reciprocal obligation was the second, and third was the honesty. ठीक है, अगर हम फर्स्ट बात करें which is of your loyalty, ठीक है, so according to the Confucianism, जो loyalty है towards your superiors it regarded as a sacred duty, एक absolute क्या है, एक obligations है. So you will find जो भी अभी modern organizations है, those who are being based in Confucian cultures, so ये जो loyalty है ये basically क्या करती है, बाइंड करती है एम्प्लॉइज को टू द हेड ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट आल्सो रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन बी देयर बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर. ठीक है, एंड दैट वी फाइंड मोर क्लास कॉन्शियस सोसाइटीज. सो जो कॉपरेशन है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर इट कैन बी अचीव्ड एट द लोअर कॉस्ट इन अ कल्चर जहाँ पे जो वैल्यू है वो एम्फेसाइज किया जाता है इन द वैल्यू सिस्टम. हाउएवर in this particular culture जो loyalty है towards your superiors such as workers loyalty to the management, वो कोई blind loyalty नहीं है. So इसी concept को हम क्या बोलते हैं, we call it as a reciprocal obligation, which is a very important concept. So this ethics stress that जो superiors हैं they are also obliged to reward the loyalty of their subordinates by showing by giving them certain blessings. ठीक है, अगर ये ब्लेसिंग्स नहीं होंगी सो लॉयल्टी भी नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट को देखें विच इज द ऑनेस्टी, सो यू कैन फाइंड अगेन यू कैन फाइंड दिस इन दिस पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, एंड इट इज अटैच्ड टू पर्टिकुलरली ऑनेस्टी. कॉन्फ्यूजन थिंकर्स क्या एम्फोसिस करते हैं दैट ऑल्दो डिसऑनर बिहेवियर, अगर डिसऑनेस्ट बिहेवियर होगा ऑल्दो इट विल गिव यू सर्टेन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, ठीक है, बट डिसऑनेस्टी विल नॉट पे यू इन द लॉन्ग रन. So जो importance है honesty की, it has certain economic implications. जब company trust करेंगी एक दूसरे को, ठीक है, and when they will not break any of the contractual obligations, so जो cost है of doing the business it would also low down. Expensive lawyers आपको नहीं चाहिए होंगे so that you can resolve your contract disputes. ठीक है, and when the companies they will go for these particular ethics, they can trust each other, violate नहीं करेंगी terms and conditions of a particular agreements. Therefore जो cost होगी of achieving the cooperation between the companies वो क्या होगी, it will be lower down in the society, such as you can see in Japan related to the society जहाँ पे trust क्या है less pervasive है. ठीक है, so these are the economic implications of different religions. Now coming to the value of and attitudes, so value क्या है, basically they are the convictions regarding what is right and wrong, good or bad, important or unimportant. And what is attitude? Attitude is a persistent tendency, ठीक है,
to feel and behave in a particular way towards someone or something. Okay, so attitudes and the your values, they play a very important role. ठीक है, सो वैल्यूज का देखेंगे तो वैल्यूज का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके कल्चर एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स, इम्प्लॉइंग दैट उनका कोई एटीट्यूड नहीं है रिगार्डिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और मे बी रेशियल discrimination. Attitude and belief, they differ all over the world and इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी होता है, therefore बिजनेस के ऊपर भी होता है. Therefore it is very much useful for the international business manager, that is they need to understand the attitude. ठीक है, since they have to deal with different people, those who are coming from the different cultures. ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, सो एटीट्यूड टुवर्ड द टाइम, एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क एंड अचीवमेंट, ठीक है, दे आर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंस. अगर हम कंसेप्ट देखें टाइम का, सो दे वेरी बिटवीन द कल्चर्स. कुछ कंट्रीज में क्या माना जाता है, द टाइम इज मनी. इन अदर कंट्रीज एटीट्यूड इज कंसिडर्ड even offensive. अगर हम countries की बात करें such as Europe and North America, punctuality is there, ठीक है, but in other countries you can see punctuality maybe ना हो, ठीक है. So this is the difference between your attitudes and values. अगर हम customs और manners देखें, so customs and manners they are also very much important. Customs क्या है, they are common established practice of behavior. On the other hand, manners, they are behavior that is considered appropriate in a particular social setting. So custom क्या dictate करते हैं, that is how the things are to be done. On the other hand, अगर हम देखें manners क्या है, manners क्या है, they are used in carrying them out. Okay? For example, in countries which subscribe Western culture, food is eaten on the table using individual plates with knife and forks. In Islamic countries में क्या है, common platter में food serve किया जाता है and it is being eaten by all of the families. Similarly, अगर हम चाइना में देखें तो Chinese they eat with chopsticks while Indians they use their fingers to eat. ठीक है. On the other example we can see in terms of custom, वो क्या हो सकता है कि अरेबियन कंट्रीज में क्या है, it is considered very bad manner कि आप handshake कर रहे हैं with the person of a higher authority. ठीक है. But in the case of United States, people they offer to shake hands regardless of a person social status or rank. ठीक है. ऐसे ही hugging, holding the hands and others. So these common practices they differ in different countries. The last is aesthetics. So basic जो complexity है international business में, as you compare it with the domestic business, it is due to the difference in the culture. ठीक है. So जो changing culture environment है of international business, it give you unlimited opportunities so that you can develop competitive advantages for a business manager, and you need to understand all of these elements of the culture environment or the differences in the culture. The last is aesthetics. Aesthetics को देखेंगे तो aesthetic क्या है, it refers to the artistic taste of a culture, and moreover the increasing culture interconnectedness between different part of the world has resulted in appreciation of Indian classical music in the West and the emergence of hugely popular fusion music. Okay, so this is the aesthetics. Okay, so businesses, they want to internationalize their operations, they need to understand the differences that lies in the different elements of the business environment, which includes your economic environment, cultural environment, legal environment, and political. Okay. Now we are starting with the next, which is your theories of international trade. Okay. First theory is your theory of absolute advantage. ठीक है. ठीक है, बाकी की theories जो factor proportion theory है, Leontief है,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये हम कर चुके हैं. कमिंग टू द एब्सोल्यूट एडवांटेज, फर्स्टली किसने ये थ्योरी दी थी? सो इट वाज बीइंग गिवन बाय एडम स्मिथ in his 1776 landmark book, which was being known as the Wealth of Nations, and it attacked the mercantilist assumption that trade is a zero-sum game. ठीक है, इससे पहले जो एक फर्स्ट थ्योरी थी वो mercantilism में थी. ठीक है, ओल्ड थ्योरी, mercantilist theory. Now, in his time, in the Adam Smith time, the English, by the virtue of their superior manufacturing processes, they were able to produce the textile more efficiently, and due to the combination of a favorable climate, good soils and accumulated expertise, the French had the world's most efficient wine industry. That means in the time of the Adam Smith, जो Englishmen थे और जो English थे, they had their superior manufacturing processes, and because of that, in the world they were the most efficient textile manufacturers. On the other hand, अगर हम फ्रेंच की बात करें, तो फ्रेंच के पास वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट वाइन इंडस्ट्री थी. क्यों? क्योंकि उनके पास फेवरेबल क्लाइमेट था, गुड सॉइल था, एंड मोर ओवर दे हैड दैट पर्टिकुलर एक्सपर्टीज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो इंग्लिश के पास क्या थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थी इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम फ्रेंच को देखें, सो दैट दे हैड एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन. ठीक है, नाउ अगर किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन अ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये कंट्री क्या है? एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री. और अगर कंट्री ए एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाई, सो उसको ये गुड क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए. और अगर वो इनएफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, तो उसको वो गुड क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए, जिसमें उसकी क्या है? प्रोडक्शन डिसएडवांटेज. ठीक है, सो दिस मींस दैट अगर हम इंग्लैंड और फ्रांस का ही केस लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है उसको क्या करनी चाहिए? अपनी जो टेक्सटाइल्स है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए. किसको? फ्रांस को. और इन रिटर्न इंग्लैंड को क्या लेना चाहिए? वाइन लेनी चाहिए. सिमिलरली फ्रांस को क्या करना चाहिए? अपनी वाइन एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट क्या करना चाहिए? टेक्सटाइल इंपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, so Smith's basic argument therefore is that a country should never produce goods at home that it can buy at a lower cost from other countries. ठीक है, स्मिथ का ये कहना था कि कंट्री को कभी भी वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए अपनी कंट्री में जो कि वो लोअर कॉस्ट में दूसरी कंट्रीज से ले सकता है. ठीक है, सो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो दो सोर्सेस की वजह से है. फर्स्ट क्या है? नेचुरल एडवांटेज की वजह से, और दूसरा रीजन क्या है? एक्वायर्ड एडवांटेज की वजह से. नेचुरल एडवांटेज का मतलब क्या है? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है, क्या है कि कंट्री के पास यहाँ पे नेचुरल एडवांटेज किसके पास है? फ्रांस के पास है. फ्रांस के पास क्यों है? फ्रांस के पास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्रांस क्या कर सकती है? बिकॉज ऑफ इट्स सॉइल एंड अदर रीजंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट लैंड, फ्रांस क्या कर सकती है? कंपेयर, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइन. ठीक है, मगर अगर एक्वायर्ड एडवांटेज देखें, सो एक्वायर्ड एडवांटेज यहाँ पे क्या है? बेसिकली अभी आप देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड टुडे इन द मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक्वायर्ड एडवांटेज है वो आपके मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज में है rather than your एग्रीकल्चर गुड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सो जो कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंपैरेटिवली, उनके पास क्या है? एक्वायर्ड एडवांटेज है. अब एक्वायर्ड एडवांटेज प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है और प्रोसेस टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है. ठीक है, अगर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में है तो एक कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको एक आइडेंटिटी देगी. ठीक है, दैट वुड हेल्प द कंट्री इन ऑर्डर टू फेस द ग्लोबल कॉम्पिटिशन. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश विद दैट ऑफ द अनदर कंट्रीज प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं ब्रास आइटम्स की, सो दे कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फॉर देयर क्राफ्टमैनशिप एंड क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ऐसे ही आपका प्रोसेस टेक्नोलॉजी भी हो सकती है. ठीक है, नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एब्सोल्यूट एडवांटेज,
ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सो नाउ विल कंसिडर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू ऑफ द कंट्रीज. यहाँ पे हमने दो कंट्रीज ली हुई है, वन इज घाना एंड द अदर इज द साउथ कोरिया. नाउ लेट अस अज्यूम दैट ये जो दो कंट्रीज हैं, घाना और साउथ कोरिया, उनके पास सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं एंड ये इन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ईदर राइस और कोकोआ. ठीक है, लेट्स से 200 यूनिट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के इनके पास अवेलेबल है. नाउ वी फर्दर अज्यूम दैट कि घाना को 10 रिसोर्सेज लगते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोकोआ और 20 रिसोर्सेज लगते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस. ठीक है, ऐसे ही साउथ कोरिया को कितना 40 resources लगेंगे in order to produce 1 ton of cocoa and 10 resources it would require in order to produce 1 ton of rice. ठीक है, so therefore अगर हम ये चीज देखें, घाना के केस में देखें, so अगर हम घाना के केस में देखें, so घाना या तो क्या प्रोड्यूस करेगा 20 टन्स ऑफ कोको एंड रो राइस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, वी हैव 200 रिसोर्सेज. ठीक है, एंड वी आर कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू ऑफ द नेशंस. ठीक, तो यहाँ पे या तो घाना क्या करेगा, 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 10, तो या तो वो 20 क्या कर रहा है, टन्स बना रहा है कोकोआ के विद 0 टन्स ऑफ राइस. ठीक है, और या तो क्या करेगा 10 टन्स ऑफ राइस बनाएगा विद 0 टन्स ऑफ कोकोआ. ठीक है, और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इन बिटवीन ऑफ दीज टू. ऐसे ही अगर हम साउथ कोरिया का देखें, सो साउथ कोरिया के 40 रिसोर्सेज लग रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोको एंड 10 रिसोर्सेज लग रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस. ठीक है, सो साउथ कोरिया भी ऐसे करेगा. अगर उसके पास 200 रिसोर्सेज ही है तो या तो वो पूरे 200 रिसोर्सेज इसमें लगाएगा कोकोआ में. सो अगर पूरे 200 रिसोर्सेज लगा रहा है तो 5 टन्स ऑफ कोकोआ बना सकता है विद 0 टन्स ऑफ राइस, या फिर पूरे रिसोर्सेज अगर लगा रहा है राइस में तो या तो क्या करेगा 20 टन्स ऑफ राइस लगाएगा बनाएगा और 0 टन्स ऑफ कोकोआ बनाएगा, और कोई भी कोई ना कॉम्बिनेशन हो सकता है इन बिटवीन ऑफ दीज टू. नाउ लेट्स से हम एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जहां पे जो कंट्री है वो आपस में ट्रेड ही नहीं कर रही है. ठीक है, सो अगर कंट्रीज आपस में ट्रेड ही नहीं करेंगी तो उस केस में क्या होगा, हर एक कंट्री क्या करेगी, अपने हाफ ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो किसमें लगाएंगी, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ एज वेल एज ऑफ राइस. यानी 100 रिसोर्सेज लगा रही है. अगर 100 रिसोर्सेज लगा रही है तो इसका मतलब क्या है, 100 लगा रही है. तो देखो घाना के केस में कितना होना चाहिए, 100 एंड 100, यानी 10 एंड 5, 10 एंड 5. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर 100 लगा रही है तो 2.5 एंड 10. ठीक है ना, ठीक है, 100 रिसोर्सेज लगा रही है और जितना उनको रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने में लग रहा था. सो ये दिस इज विदाउट द ट्रेड. ना अगर विदाउट द ट्रेड देखेंगे, सो टोटल प्रोडक्शन अगर कोकोआ की देखोगे घाना और साउथ कोरिया की मिला के तो कितना है 12.5, 10 प्लस 2.5. और अगर हम राइस के केस में देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन घाना और साउथ कोरिया की कितनी है, 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो घाना के एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो किसमें बनाने में है, घाना के एब्सोल्यूट एडवांटेज कोकोआ बनाने में है. ऑन द अदर हैंड अगर हम साउथ कोरिया की देखें तो साउथ कोरिया की एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, इन प्रोड्यूसिंग द राइस. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि घाना को किसमें स्पेशलाइज होना चाहिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, और साउथ कोरिया की जो स्पेशलिटी है वो किसमें है, इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है वो कितना आ रहा है, 27.5. According to Adam Smith, in such a situation such as this, both countries should benefit from the specialization and trade. और जो world production है वो increase होगा. World production कब increase होगा, अगर दोनों ही countries क्या करें, specialize करें into the production of certain commodities, जिसमें उनकी क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एंड देन वो किसी और गुड को एक्सचेंज कर सकती है, जैसे इंपोर्ट कर सकती है, जिसमें उनकी क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज. ठीक है, आपको समझ आया?
अब अगर प्रोडक्शन होती है विद स्पेशलाइजेशन, सो एज आई सेड, अगर प्रोडक्शन होती है विद स्पेशलाइजेशन तो घाना की एफिशिएंसी किस में है? इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, और साउथ कोरिया की इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। सो अब इनको अपने रिसोर्सेज हाफ डिवाइड नहीं करने पड़ेंगे, इंस्टेड वो क्या करेंगे कि जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है सारे के सारे रिसोर्सेज वो उसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? घाना पूरे के पूरे 200 रिसोर्सेज जो है वो किस में लगाएगा? इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ। एंड इन द सेम मैनर साउथ कोरिया भी अपने पूरे के पूरे 200 रिसोर्सेज किस में लगाएगा? इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। सो यहाँ पे 10 रिसोर्सेज लग रहे थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोकोआ। सो 200 डिवाइडेड बाय 10 इज 20। तो लग रहे घाना के तो 0। ऐसे ही साउथ कोरिया की पूरी एफिशिएंसी किसमें है? एब्सोल्यूट एफिशिएंसी किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो 200 रिसोर्सेज इसमें, तो आपके 20 आ गए, बिकॉज 10 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस एंड 0। तो ये कितना हो गया? कोकोआ का पूरा प्रोडक्शन 20, यहाँ पे भी ये 20 है। दैट इज आपका जो आउटपुट है, वर्ल्ड आउटपुट इज इंक्रीजिंग। इधर 40 था अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, और इधर क्या था? विदाउट ट्रेड 27.5। दैट मीन्स अगर कंट्रीज अपना स्पेशलाइजेशन करती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में एंड देन उसी के साथ ट्रेड करती हैं, सो जो वर्ल्ड आउटपुट होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ अगर हर एक कंट्री प्रोड्यूस करती है वही कमोडिटी जिसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, सो एज आई सेड कि घाना ने इसे प्रोड्यूस किया आपका कोकोआ, ठीक है, और साउथ कोरिया ने राइस प्रोड्यूस किया। सो घाना ने कितना प्रोड्यूस किया? कोकोआ 20 टन्स एंड साउथ कोरिया ने 20 टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस किया। सो ग्लोबल आउटपुट भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, विद द एफिशिएंसी, विद द स्पेशलाइजेशन। विदाउट स्पेशलाइजेशन अगर हाफ ऑफ डिवोट कर रहे थे रिसोर्सेज, सो दे वर एबल टू प्रोड्यूस ओनली 27.5 टन्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो जो नेट बेनिफिट है एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रेड वो कितना है? 12.5 टन्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेजर ड्रॉबैक है ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी is that it does not offer an explanation for a situation in which nation may have an advantage in producing both of the commodities. ठीक है, अब एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था? हर एक कंट्री के पास एक ही प्रोडक्ट बनाने में एडवांटेज थी, एक ही में वो एफिशिएंट थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक ही कंट्री दो गुड्स को बनाने में उसकी एफिशिएंसी हो, स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, सो ये जो केस था ये आपका थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में आया। सो डेविड रिकार्डो ने बेसिकली ये थ्योरी प्रोपाउंड की, एंड डेविड रिकार्डो ने जो एटम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज सिचुएशन में क्या था? दो कंट्रीज के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थी इन द प्रोडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कमोडिटीज। ठीक है, बट डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि जो कंट्री है कंट्री को उसी में स्पेशलाइज होनी चाहिए इन दोज प्रोडक्ट जो कि वो मोर एफिशिएंटली बना सकती है, एंड शुड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें उसकी लेस एफिशिएंसी हो। सो यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द ट्रेड बिटवीन नेशंस, जहाँ पे एक ही कंट्री के पास क्या है, मोर एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेडेबल कमोडिटीज। ठीक है, अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल of Ghana and South Korea. Again you have been given with the table, and table में आपको again resources दे रखे हैं कि कितने resources चाहिए in order to produce 1 ton of cocoa and rice. ठीक है, so जैसे घाना को 1 ton of cocoa बनाने के लिए 10 resources चाहिए, rice बनाने के लिए 13.33 चाहिए। ऐसे ही साउथ कोरिया को 1 ton of cocoa बनाने के लिए 40 resources चाहिए and rice बनाने के लिए 20 resources चाहिए। Now let us assume कि क्या है, घाना ज़्यादा efficient है in the production of both cocoa and rice। ठीक है, घाना को कितने units चाहिए resources के in order to produce 1 ton of cocoa? It's 10 units। ठीक है, ऐसे ही अगर उसको 1 ton of rice बनाना है कितने units चाहिए? 13.33। ठीक है, and साउथ कोरिया का आपको 40 और 20 है यहाँ पर। So assuming that there is no trade between these particular countries, हर एक country again क्या करेगी? अपने resources half divide करेगी for the production of cocoa and half resources they would devote in the production of the rice। ठीक है, so अगर half करते हैं again 100 resources यानी, ठीक है, so 100 होंगे तो 100 by 10
by 13.33, 7.5 and 10 हो गया. Then again 100 by 40 and 100 by 20. ठीक है. सो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है अगेन वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं होता है, जो टोटल वर्ल्ड आउटपुट है वो कितना हो जाता है, 25 टन्स. ठीक है. जिसमें 12.5 टन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोकोआ से आ रहा है, एंड 12.5 रेस्ट होगा. 12.5 कहाँ से आ रहा है, राइस से आ रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे जो घाना की जो एडवांटेज है वो किसमें है, इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, कोकोआ में भी है और राइस में भी है. ठीक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों ही कमोडिटीज ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू द साउथ कोरिया. ठीक है. बट यहाँ पे जो उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किसमें है, सिर्फ कोकोआ में ही है. ठीक है. कंपैरेटिव एडवांटेज कोकोआ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साउथ कोरिया से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो साउथ कोरिया से 4 टाइम्स ज्यादा वो कोकोआ क्या कर रहा है, घाना प्रोड्यूस कर रहा है. वाइल अगर हम राइस का देखें तो सिर्फ 1.5 टाइम्स से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है घाना. ठीक है. नाउ अगर ट्रेड विद स्पेशलाइजेशन होता है, सो अगेन ट्रेड विद स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, आप पूरे के पूरे रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, घाना यूज कर रहा है. साउथ कोरिया की कोकोआ में तो है ही नहीं एफिशिएंसी, तो अपने रिसोर्सेज किस में यूज कर रहा है, विद दैट ऑफ योर आपका दिस राइस. ठीक है. 200 रिसोर्सेज, तो आपका कितना था यहाँ पे, 20 रिसोर्सेज यहाँ पे यूज कर रहा है. क्यों, 150 रिसोर्सेज कोकोआ में, क्यों, क्योंकि उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है, कोकोआ में ही है. सो इसलिए वो ज्यादा रिसोर्सेज किसमें यूज कर रहा है, कोकोआ में यूज कर रहा है. ठीक है. बाकी के जो 50 रिसोर्सेज है वो राइस में यूज कर रहा है. ठीक है. सो इंक्रीज आपका क्या है, बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो पहले कितनी थी आपकी टोटल आउटपुट, 25 था. नाउ बाद में अगर आप देखेंगे विद स्पेशलाइजेशन, तो विद स्पेशलाइजेशन टोटल आउटपुट कितना आता है, विद स्पेशलाइजेशन इज 28.75. ठीक है. तो टोटल आउटपुट जो है वर्ल्ड आउटपुट वो भी इंक्रीज हुआ. नाउ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो रिकार्डियन थ्योरी है हम कहते हैं, इट सजेस्ट दैट जो पोटेंशियल वर्ल्ड प्रोडक्शन है वुड बी ग्रेटर अगर वो क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है rather than the restricted trade. ठीक है. यहाँ पे फ्री ट्रेड ही हो रहा था between two of the nation, that is South Korea as well as of the Ghana. ठीक है. जिससे कि जो वर्ल्ड आउटपुट था वो भी इंक्रीज हुआ. Now Ricardo theory suggests that consumers in all nation can consume more if there are no restrictions on trade as well. ठीक है. कोई restrictions नहीं होगी तो consumers जो है of both of the nations, of all the nations basically, वो क्या करेंगे, ज्यादा consume भी करेंगे. Now this occurs even in countries that lack an absolute advantage in production of any good. ठीक है. ऐसी भी countries जिनकी कोई absolute advantage नहीं है in any of the good, वो भी इससे क्या होगी, इसको benefit उसका मिलेगा उस country को. Therefore जो ट्रेड है वो क्या है, एक पॉजिटिव सम गेम है जिसमें जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं दे विल रियलाइज इकोनॉमिक गेन्स. ठीक है. सो ट्रेड क्या है, एक पॉजिटिव सम गेम है, कोई जीरो सम गेम नहीं है जैसे मर्केंटिलिज्म में था. ओके. सो दिस इज योर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज. अगर किसी को कोई डाउट है इसमें, सो यू मे आस्क. Yes, anyone has any doubt? ठीक. तो आज हमने जो कंसेप्ट्स किए हैं, बेसिकली फर्स्ट हमने किया था इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एंड देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, लाइक व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. जिसमें हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स देखा,
Then economic indicators हमने देखा. And then also with that, other than your economic environment, we also discussed about the political environment, okay, legal environment, as well as your cultural environment and demographic environment. Cultural environment में हमने different elements of cultural environment discuss किया. For example, language, non-verbal communication, aesthetics, values, customs, attitudes. ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी. ठीक है, और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हुए रिलीजन्स के ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. एंड देन आफ्टर दैट वी डिस्कस टू ऑफ द थ्योरीज, जिसमें आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थी एंड यू आल्सो हैड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ एंड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो. यस, आज हो जाएगी पीपीटीज शेयर. Anything else? Yes, anything else you want to ask? जितना भी हमने किया आज. Chalo, that's it for today's class. If you have no doubt, then